नमस्ते, मैं हूँ सनी, आपकी होस्ट ने सनी फ्रॉम सनी साइड अप। तो आज हम लाए हैं एक बड़े भारी भरकम नाम को, वीरेंद्र मिश्रा जी। ये आईपीएस ऑफिसर है और अपना यूपी से हैं। और लेकिन मैं इनको वीरेंद्र प्रताप मिश्रा जी नहीं बुलाती हूँ या वीरेंद्र कुमार मिश्रा जी नहीं बुलाती हूँ, वीर बुलाती हूँ। तो मैं इसको वीर ही बुलाने वाली हूँ यहाँ पे भी। तो वीर, वेलकम। आइए, आपका थैंक यू कि आप हमारे जूम पे आए, हमारे प्रोग्राम पे आए और हमसे बातचीत करने को तैयार बैठी। Thank you for having me here. तो वीर, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं, इन लेमैन्स टर्म यार। आप किस अंदाज में पूछ रहे हैं? पुलिस के बारे में पूछ रहे हैं, मेरा प्रोफेशन, कि उसके अलावा मैं आपको क्या करता प्रोफेशन हूँ? पूछ रहे हैं, फिर प्रोफेशन के साथ हम थोड़ा सा डिटूर होएंगे जो आप दूसरे काम करते हैं। प्रोफेशन में मैं पुलिस अधिकारी हूँ। आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश काटर। और अभी मैं पुलिस हेडक्वार्टर्स में पदस्थ हूँ। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अलग अलग मिनिस्ट्री में डेपुटेशन पे था। with Ministry of Women and Child Development as CEO, CARA, Central Adoption Resource Authority. I was Executive Director, Nehru Working Sangathan and Analysis. That was Ministry of Youth Affairs and Sports. And then I was with Ministry of Social Justice and Empowerment as Director, National Head of National Institute of Social Defense. तो 7 साल डेपुटेशन के बाद मैं वापस से काडर आया हूँ पुलिस हेडक्वार्टर्स में पदस्थ। एंड आई एम लुकिंग आफ्टर स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, MEIG। तो ये था लंबा चौड़ा, ये पुलिस ऑफिसर है, लेकिन पुलिस ऑफिसर के साथ ये दूसरे काम ही करते रहते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते रहते हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि ये हेविली इन्वॉल्व हैं वुमेन, चाइल्ड, उनसे इन्वॉल्व केसेस, रेप एंड ऑल दैट, या रेप सर्वाइवर्स, उनको उनको हेल्प Exactly right, देना। but yeah, my work is on anti-human trafficking. सॉरी, योर वर्क मेरा इज काम on anti-human trafficking. राइट, राइट। तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिक में वीर, do you see a lot of vulnerable people, vulnerable women especially, or vulnerable men as well? It's both. It's both. But globally, somehow, if you go through the statistics, then statistics say that it's more the women and children who are trafficked. और वो इसीलिए मेरे ख्याल से, क्योंकि perhaps we have never seen things from other perspective कि males भी हो सकते हैं, prejudice है against one sex, कि मेल कभी vulnerable हो ही नहीं सकता है, ये एक अलग सा एक धारणा है हम लोग की। But otherwise they are equally vulnerable, the males as well as females. एंड उसका आपको रिफ्लेक्शन इसी में दिख जाता है कि बहुत कंट्रीज में जो शेल्टर होम्स होता है, जो रेस्क्यू के बाद विक्टिम्स जब रेस्क्यू होते हैं तो उनको शेल्टर होम्स में रखा जाता है। लाइक इन इंडिया यू डोंट हैव एनी शेल्टर होम फॉर मेल्स, यू हैव ओनली शेल्टर होम फॉर आइदर फॉर चिल्ड्रन और फॉर वुमेन। So this is, I think, which is one myth which needs to be addressed now, that whoever is vulnerable, the trafficker is going to exploit. They are going to victimize. So ये जो they don't care what gender you are, what sex you are. okay, so ये जो traffickers हैं, when they do this trafficking, what is the main reason behind it? Is it only the sex trade, or is it could be other things as well? Again, this is a wonderful question because, if you go through the data, तो ILO का डेटा लेंगे या UNODC का डेटा लेंगे, तो वो कहता है कि 70% of the trafficking happens, the victims are women and children. And in some data, it has been said that 80% of the victims are exploited for, commercially sexually exploited, which is again wrong. अब तो डेफिनेशन में अगर देखा जाए तो सिंपल कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं, फोर्स लेबर की बात करते हैं, और पैलेर्मो प्रोटोकॉल डेफिनेशन यूएन का देखें तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, इसको ऑर्गन हार्वेस्टिंग हम लोग कहते हैं। बट अगर यूएसए का अगर आप ट्रैफिकिंग विक्टिम्स प्रोटेक्शन एक्ट का डेफिनेशन देंगे तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी नहीं, मेनली जो है फोर्स लेबर और सेक्स ट्रैफिकिंग की बात होती है। अब बाकी चीजें जो हैं वो स्लेवरी या समथिंग अकिन टू स्लेवरी में एडजस्ट एकोमोडेट करना होता है। बट द टर्म इज सो जनरलाइज्ड that people don't even look, get deep into it. So most of the cases which are registered, it's going to revolve around either
sex trafficking or labor trafficking. So that is, I think, like, one of the most unfortunate thing in efforts to address or combat human trafficking. Because besides forced labor, sex trafficking, like I had coined the term medical trafficking, and medical trafficking, surrogacy is there, clinical drug trial is there, which is not part of any definition, but it is happening in a big way. And third world countries are being used as guinea pigs for, like, clinical drug trials, for surrogacy. And similarly, adoption trafficking is an issue which is not talked about, or anybody doesn't want to even mention, like, the subject of adoption trafficking. तो बहुत चीजें हैं जो अभी तक चर्चा में नहीं है, definition को revisit करना चाहिए, and that is one thing, that is one of the reasons why I have established the first anti-human trafficking lab in the country, by the name RACE Lab, that is Research, Advocacy and Capacity Building Against Exploitation. So we want to, like, bring in policies, schemes on the basis of evidence-based, on the basis of research, proper research, ground research. And second is to, like, do some advocacy on the basis of that research. And third is to build the capacity of all the stakeholders, which would include social justice system as well as the criminal justice system stakeholders. I mean, seriously, even मैं भी नहीं सोचती थी कि organ transplant is again in a part of it. I never thought about that. My brain never went that way. I never thought that even surrogacy and the adoption could be a part of this. How ignorant I was, and I'm sure that it is an eye opener to the people who are listening as well. Ki ye teen are the major. Maybe it changes from region to region, country to country, possibly as well, isn't it? And this is the basic thing for India. I mean, it depends on the vulnerability, and the causes of vulnerability. I mean, it could be either social, cultural, economic, political, or environmental. तो जो जहाँ का vulnerability होता है, trafficker just pounces on the vulnerable people, and particularly those people who expose their vulnerability. तो ढूंढ रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, देखते रहते हैं, they scout and spot the vulnerable people, and then they would just, like, recruit them. वो पूरा का पूरा trafficking network है, and बड़े नीचे level से लेके ऊपर level तक चलता है. आप समझ ही नहीं सकते कि कितना सिस्टम है, क्योंकि बहुत बार जो ट्रैफिकिंग जो पहले लेवल पे होता है, मतलब जहाँ जिसको हम रिक्रूटमेंट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, तो वहाँ ज्यादातर तो वही लोग होते हैं जिनको की विक्टिम जानते होते हैं. तो इसीलिए सिर्फ बहलाना फुसलाना होता है, which I call, like, I have developed a model called scare model. Scare model is how, like, either the traffickers recruit them. So it is like scouting and spotting, then convincing the victim, and then, like, alluring them by promising them some better prospects, and then recruiting and exploiting. So this is what the, like, modus operandi of the traffickers. So वो जो spotting and scouting होता है, वो बड़ा interesting है traffickers का, क्योंकि लोकल लोग रहते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, और वो ट्रैक कर रहे होते हैं कि कौन अपना वल्नरेबिलिटी एक्सपोज कर रहा है ज्यादा, बस उसको वो लोग पिक कर लेते. और ये हम लोग को समझ नहीं आता, हम लोग को लगता है ये लड़का लड़की जो है, या जो भी पुरुष है महिला है, the male or the female is perhaps going to some place or being, like, accompanying someone, just looking for some, like, greener pastures or, like, a better option, but actually it's not so. Yes, it's very scary. So आप involve होते हो from your professional point of view, or also because you have a passion in this area? Unfortunately, I haven't, professionally, I've never been, I would say, that posted at a place where we look into these things. So I would say that professionally I have grown, because being a police officer, my understanding has improved. I've been able to, like, do some mapping of vulnerability. I can understand the causes, the causal factors of vulnerability, just because being in police and, like, being in field. But otherwise, this is my passion. I've dedicated my life to anti-human trafficking.
हाँ, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि हाउ इंडियन पुलिस का नाम इतना इतना खराब यूज मूवीज ने खराब किया, बॉलीवुड ने खराब किया कि पुलिस लास्ट मिनट पहुंचेगी, जब सब हो जाएगा वो हो जाएगा। बट सिंस आई हैव नोन यू, you have never come across to me a person who will reach at the last moment. You were the one who will actually bring up that issue right from the bottom and say कि hey, ये issue है, इसका करना क्या है? And how many police officers are like you who actually think like you? I don't know. Maybe you have a See, percentage. see one thing, perhaps as you said that the image which has been created is बॉलीवुड को दोष दो, बॉलीवुड को। ये हम लोग से बॉलीवुड को ही नहीं बोलते हैं, उसका उसी पे मेरा रिसर्च था जो मैंने पीएचडी किया था, चेंजिंग इमेज ऑफ पुलिस। सो व्हाट आई फाउंड इन माय रिसर्च इज दैट ज्यादातर समय जो इमेज बिल्ड होता है दैट इज बिकॉज ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। सो टर्शियरी वुड बी लाइक जो कभी भी जानता भी नहीं है, जिसने कॉन्टैक्ट उससे पुलिस से कभी रहा हो, फिर भी एक इमेज बिल्ड हो गया, जैसे कि फिल्म के कारण हो, बॉलीवुड के कारण हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसके कारण। secondary, like like someone else must have been like in touch with police, and वो कुछ शेयर करता है, उसको ये लोग क्योंकि पहले से ही मन बना हुआ है तो उसको नेगेटिव रूप में दे देते हैं। प्राइमरी कॉन्टैक्ट बहुत कम लोगों का पुलिस से होता है फॉर द पर्पस ऑफ like some work, except for on the roads जो ट्रैफिक वाला। If you see the proportion, as if you bring the ratio between the people who are in touch with police and the image which they carry, it's minuscule. I mean, the people who must have been in direct touch, interaction के बिना ही होता है, जिसमें फिल्म का एक बहुत बड़ा रोल है, and they have done like mockery of that. तो otherwise देखा जाए तो पुलिस अगर एक दिन के लिए बैठ जाए तो अनार्की हो जाए। Of course. Certainly, like they are there to save you, and they have. Second is the image what people carry or what they perceive is that police is omnipresent. Next to God is police in terms of the work they expect from them, but at the same time, like गाली देने में जो उनको डिमांड मांग करते हैं, तो ये बड़ा एक कॉन्ट्राडिक्शन है। आप कहीं चोरी हो जाए, कहीं इतने बड़े पॉपुलेशन में चोरी हो जाए, तो अगर चोरी बोलेंगे कि पुलिस स्ट्रेट अवे स्टेटमेंट दे दीजिए, आप कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो दिस इज अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ द सिस्टम, एंड पीपल हैव टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट। लाइक इन कोविड दे हैव शोड दैट एवरीबॉडी वाज नॉट मूविंग आउट ऑफ देयर फोर वॉल्स, एंड पुलिस सड़कों पे थी पूरे कोविड, बहुत जाने गई है पुलिस वालों, फिर भी कोई नहीं था जो जिसने मना किया हो कि मैं नहीं जाऊंगा काम। नॉट अ सिंगल स्टोरी दैट आई हैव। यहाँ पुलिस वालों ने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, मरने का डर है मुझे। कौन करता है? हकीकत तो तब आती है जब डिफिकल्ट सिचुएशंस में कौन कैसा रिस्पॉन्ड। ऑफ कोर्स हकीकत तभी आती है, क्योंकि नहीं तो लोग कहने को बहुत कुछ कहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। आई मीन लाइक यू, आई वाज ऑन द रोड्स इन कोविड टाइम्स बिकॉज़ आई वर्क, मैं एनएचएस पे काम करती थी, तो एंड आई वाज लिटरली सेटिंग अप द टेस्टिंग सेंटर्स विद देम, जहाँ पे टेस्ट हो सकते हैं, जहाँ पे नीडल्स लग सकती हैं बाद में। सो आई हैड टू बी ऑन अ रोड क्वाइट अ लॉट, एंड सो आपको लगता है कि and it gives you satisfaction, वो job satisfaction मिलती है आपको जब आप रोड पे निकलते हो, आप देखते हो कि yes you are helping people out, which is good। तो आपको लगता है कि परसेप्शन ऑफ द पुलिस अब चेंज हुई है, या पुलिस डिपार्टमेंट कुछ कर भी रहा है कि वो परसेप्शन चेंज हो जाए लोगों की? I mean, I find police very helpful जब भी जाती हूँ। बॉबी आपके यहाँ तो वैसे ही पॉपुलर है कि बॉबी है, नहीं, मैं इंडियन पुलिस की बात करती हूँ। मैं तो देखो साल में 3 बार इंडिया जाने वाली लड़की हूँ, तो मेरे लिए इंडिया इज एज मच इम्पोर्टेंट एज यूके। मेरे लिए भारत मेरी क्या कहते हैं, ये यूके मेरी कर्म भूमि है, लेकिन इंडिया मेरी धर्म भूमि है। बिल्कुल, इंडिया में जो काम होता है पुलिस का बहुत अच्छा इमेज बन रहा है, सब कुछ अच्छा हो। And now the police have also started interacting with people, talking to the community directly, involving and engaging them in their activities. So image is improving in a big way. And I think COVID has really brought a lot of change.
in a common man's perception. So, वीर आप ये जो दूसरा जो काम करते हैं जो बच्चों के लिए जो vulnerability के लिए जो ये जो how do you do it? I mean, if people wants to get involved with that project, right? Where do you want them to get involved? How do they get involved? Because there'll be a lot of people who will feel I passionately feel about it and I want to really be some help and I want to do this. तो कैसे हमारे इंडिया में क्योंकि बहुत सी लेडीज काम नहीं करती हैं बट दे वांट टू डू दे वेल एजुकेटेड दे वांट टू डू समथिंग तो कैसे हम लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा ब्रीफ काम में समझा दूं क्या है वी वर्क विद बेड़िया कम्युनिटी बेड़िया इज डीनोटिफाइड ट्राइब जिसे घुमंतू नहीं इनफैक्ट डीनोटिफाइड ट्राइब मान के चलिए जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में ब्रिटिशर्स ने कुछ कम्युनिटी को क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर दिया था और 1952 में 1952 में उनको डीनोटिफाई किया गया कि दे आर नॉट क्रिमिनल ट्राइब्स बट अनफॉर्चुनेटली स्टिल द स्टिग्मा इज देयर so we work with a community called Veerendra community which again is a DNT denotified tribe and traditionally they are into intergenerational prostitution unfortunately a very young girl soon after puberty is prostituted by family members. It could be mother, and many of the children won't be having any identifiable biological father because they are fathered by customs. तो ये जो situation होता है वो उन बच्चों के साथ में I landed up in a village. I had interaction with them, so then I got very moved, and I felt that we should start working with this community. And since 2007 we started working. 2010 में हम लोग कुछ बच्चों को लेके आए थे भोपाल में 13 बच्चों को who were most vulnerable in those villages. And there was no disparity. I mean, we brought boys as well as girls from that community because boys are the potential pimps, and boys do nothing. They don't work, and girls are the potential, girls who would be prostituted, and at a very young age, as I told. So, उनमें से लेके 13 बच्चों को हम लोग 2010 में भोपाल लेके आए थे, and we started working, and we had a great success, wonderful success stories. और उसके बाद में ये काम होते होते बढ़ते बढ़ते now we have started working in 60 villages in 6 districts of Madhya Pradesh. So we are working with more than 5,500 children. So this and with more than 4,500 or something the families of Bidya, which is a great inroads. I would say that our success story because it is very difficult for you to get into that village. They are very cynical. They won't let anybody enter their village because the only interaction they used to have with males was for prostitution as customers. So this is what the image was. But thankfully, after the hard work, in all these years, we have been able to make inroads. We have good, the trust deficit has been breached now. So we go, they come here, and right now we have more than 70 students here studying in Madhya Pradesh. Wow. And out of which 30 or 35 students are in colleges. So somebody is doing nursing, some guys are doing some children are doing engineering, pharmacy, law, so name it and they are into this. So we support them, try to cover most of the expenses, and besides that our 3 students of 9th class have gone into the country's one of the best reputed school for girls, and that is Banastari in Rajasthan. So 3 students have gone there. We are trying to give them the best options, and I have developed again here a model for the organization which is Samvedana, basically the non-profit organization which I had founded way back in 2002, and since 2007 we started working with Bedia community. So I work on a model called SOMON. That is what I feel is anybody getting into prostitution, they get into it because despite being so much of stigma attached to that in Indian society, it is because they have compromised with their self-esteem and self-dignity. So model is that we first don't have to be moralistic.
the M part is we are not supposed to be moralistic. We have to elevate their self-esteem and self-dignity. That is the only way. The moment that you trigger that part in them, so they will start questioning you. That stigma will hurt them. Right now, it is normalized. There is a concept called normalization in sociology. Yeah. So, if you call somebody a prostitute, they won't mind it because it is normalized. And it is normalized just because they have compromised with their self-esteem and self-dignity. So we say, let us elevate that, enhance it. Second is let us provide them, let us help them get access to opportunities and provide them better options, and without being moralistic. And SOM. So this is the way that the Samvedna is working. So you will find it, even if you ask a student who was, these children whom we work with. So they are, if you ask them, she's in sex work, she would say that. Or if she's been into prostitution, she'll say that. My mother is into it. We say that be what you are and prove to the world that you are no less than anyone else. That sort of confidence that you should have. And that happens only if your self-esteem and self-dignity is it's good. I mean, it's as it is with everyone. So this is how we have been working, and now we are working with 5,500 across Madhya Pradesh. If anybody wants to join, there are two options. One is Race Lab. They can come and because Race Lab is again a pan-India thing which has been established in Samvedna. As I told you, this is the first anti-human trafficking lab. So we work on research, advocacy, and capacity building. So if somebody is interested in these parts, they can come volunteer. And for Samvedna, if they want to directly get involved in intervention that we are doing with BDI community, so they can support financially, or they can come volunteer, they can give their services, whichever way they want to do, they can. The option is there. Option is there. The various options are there. And I think we should ask a lot of people to actually do join, because it's such a project to pick up the ones who have always been ignored by the society. So Veer, आपकी funding कैसे आती है? I'm sure this all does not happen free. So the fundings has to come from somewhere. Some organizations are there which are supporting us, like CRY, Bajaj. So some organizations are there. Right. We get a lot of fund from there. Some people individually, they are supporting us. And even people from outside, they support us. So there are different ways. And wherever there is some gap, so we also chip in. जिसका जहां हो सकता है उस हिसाब से करके हम होता है. So one thing we have made it very clear in this organization, that even if we don't get a single penny, but still we are not going to stop this work, because when I started this work, we didn't have any fun. Still 13 बच्चों को भोपाल में लाके शुरू हमने कर. तो ये काम वही मैंने कहा कि ये पैशन है. जो भी हमारे साथ हैं, we have around on our payroll we have around 34 persons here. And though all these 34 persons, you will find them very passionate. And 60% of people who are on a payroll are basically from that community. So we are engaging them constructively so that they can bring their change. Let them be the change agent. जब तक कम्युनिटी के लोग नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता. एक्सटर्नली आप सस्टेन नहीं कर सकता है. अगर सस्टेन कराना है तो हरदम उन कम्युनिटी को रियलाइज करना पड़ेगा कि हमें कुछ चेंज लाना है. So that is it's important. Yeah, of course it's important कि जो community resist कर रही है उसको ही अगर involve कर लो तो it makes the life easier for them to come and say नहीं हमारे बच्चों को या हम इनको we do. But there उस community में भी वीर there must be 10%, 20%, 30% लोग ऐसे होंगे जो resist कर रहे होंगे आपको very strongly. मुझे इतना याद है कि जब मैं स्टूडेंट थी इंडिया में, I was in 10th 11th की स्टूडेंट थी, तो मैं जो vulnerable बच्चे हैं उनको पढ़ाने जाया करती थी. And I used to get such a resistance from their parents. झुग्गी झोपड़ी के बच्चे होते थे, अब तो झुग्गी झोपड़ी बहुत चेंज हो गई है. मैंने सर पे पत्थर भी खाया हुआ है. So I can understand the resistance coming, क्योंकि वो तो उनकी livelihood आप ले रहे हो ना. बच्चों को change करके you are changing their parents' livelihood actually.
या तो मैंने कहा टच वुड दैट पत्थर अभी तक हम लोगों ने नहीं खाया, प्यार बहुत मिला। मैं पुलिस ऑफिसर तो नहीं हूँ, तब नहीं थी, तब तो बिल्कुल नहीं थी। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि शुरुआत पुलिस ऑफिसर के कारण मुझे इनरोड्स मिला था, मगर हमने विश्वास पाया। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप कहीं किसी को जाके कुछ उनके साथ काम करना और ये ना बोले कि तुम गलत हो इसीलिए हम आए हुए हैं आपके साथ काम करना, तो फिर आपको बड़े प्यार से, और विश्वास जागृत करने के लिए यू हैव टू वर्क फॉर 3-4 years कंटिन्यू, ऑफ कोर्स, लाइक फ्रॉम किसी भी चीज में विश्वास होना बहुत, रिलेंटलेसली। या ऑफ कोर्स। सो एंथ्रोपोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट होता है पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट, जहाँ की आप वही कम्युनिटी में रहना। तो मैं उन गाँवों में रहा हूँ, आई हैव स्टेड इन देयर हाउस, लाइक डिस्पाइट बीइंग इन पुलिस। और मैं और वाइफ दोनों जाके रहे हैं उनके घरों में, और उसके बाद में जाते थे, हम लोग दोनों बैठते थे, सब कुछ लगातार हम लोगों ने किया। तो उसके बाद से उनको विश्वास, इट टुक अस 3 to 4 years कि इतना उनको विश्वास कि अपने बच्चों को अपने गांव से निकल के जाने के लिए उन्होंने अलाउ कर, 12-13 साल की बच्ची, जबकि ये पता था कि बाहर जाते किसी को पता लगे बेड़िया के बच्चे हैं तो ये मान के चलेंगे कि दे आर सेक्स वर्कर्स, अगर बच्चियां हैं तो। उसके बाद भी जाने दे के हमारे पास भेजा, और आज के दिन तो आप देखिए कितने बच्चे हमारे पास। तो ये वो विश्वास पैदा करना पड़ता है। एंड नाउ वी आर थैंकफुल, एंड एज आई टोल्ड यू, इट इज द कम्युनिटी विच इज कमिंग फॉरवर्ड, एंड अपने ही लोग जाते हैं, मोबिलाइज करते हैं और उनको प्रेरित करते हैं। They encourage them to send their children, and we bring only those children who are more vulnerable, and otherwise who have potential to grow, do better. Like one of the student whom we brought was the first child to come to Bhopal in 2010. So this year she appeared in UPSC Civil Services interview. Wow. And she did a BTech and MTech. Just imagine, I mean, much better than many of the common, students. So it has been an unbelievable journey and very enviable journey to others. But at the same time, I give all credit to these students from that community. They have immense potential, immense, unbelievable potential. उनको बस आपको ऑप्शन देना होता है और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। उनको आपके सहारे की जरूरत नहीं है, आपको उनकी सहारे की जरूरत है। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर मैं कुछ भी ग्रो किया हूँ तो सिर्फ उनके कारण किया। अगर ह्यूमिलिटी आया है मेरे में, अगर कहीं के बारे में मुझे भारत का नक्शा कुछ समझ आया है, तो सब ऐसे ही इन लोगों से मिलके ही समझ आया। So I said I don't give anything to them, they give me a lot, no doubt. नहीं, बात तो बिल्कुल सही है। अगर आई मीन वन आई लाइक टू टेल यू माय व्यूअर्स कि जो इनकी बेटर हाफ हैं वो भी पुलिस में है, वो भी आईपीएस ऑफिसर है। सो ये दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी काम करती है। और दूसरा, आई ऑलवेज बिलीव कि अगर आपने इंडिया को रियल टर्म्स में समझना है, भारत को रियल टर्म्स में समझना है, तो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जाके नहीं है, वो आप अपने रूरल एरियाज में जाके ही समझ पाएंगे, वो ग्रास रूट को पकड़ के ही समझ पाएंगे, जो मोस्ट ऑफ द लोग शायद नहीं कर पाते हैं। दे टू बिजी इन देयर लाइव्स वर्किंग फॉर आईटी, रनिंग दिस रनिंग दैट। वो भूल जाते हैं कि हमारा जो रियल देश है 70% is still in the villages, or was in the villages, जहां से चेंज जरूरी खूबसूरत वही नहीं, चेंज की बिल्कुल जरूरत नहीं है। गांव देहात हमारा जितना खूबसूरत है उतना शहर हो ही नहीं सकता। एक खूबसूरत की बात नहीं, जहां हमको शिक्षित करना है, जहां हमको सेल्फ इंडिपेंडेंट करना है, जहां हमको वन थिंग सनी, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, हम लोग जो सोचते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन ही सब कुछ है, सी उनका जो एजुकेशन का अलग है, स्किल जो अलग है वो बहुत बहुत है। तो फॉर्मल को उसमें मिला दिया जाए तो मेरे ख्याल से जितने शहर में लोग हैं उनसे बेहतर वो लोग जानते हैं। वंडर्स, दे कैन डू वंडर्स एक्चुअली। एग्जैक्टली, उन अपने फील्ड में वो माहिर। ऑफ कोर्स the problem is that because of that formal education, so they are unable to communicate. The linkages that should be established is missing. So what we need to do is just create that link, tap on their potential, and whatever skill they have, let us hone that skill rather than imposing the skill from outside. उसको enhance करना है, ये पास है, उसको enhance करना है, उसको enhance करना है। Exactly. That's it.
वीर, वैसे तो दिल करता है कि आपके साथ बात करते जाओ क्योंकि आपके पास इतनी नॉलेज है। जब मैं पर्सनली भी मिली थी तब भी मुझे लगता था कि वीर के पास बैठो और बातें सुनते जाओ, इसकी एक्सपीरियंस ग्रैब करते जाओ। तो मैं कोशिश करूंगी आपको, अगर आप आएंगे तो फ्यूचर एपिसोड्स में भी लाने का। बट ये मुझे जो कॉम्बिनेशन आपके बीच में मिला ना, कि पुलिस विथ सच अ सॉफ्टर हार्ट, विथ सच वो पुलिस ऑफिसर को हम सोचते हैं कि बहुत सख्त होगा, बहुत ये सब होगा, बट उसके पास इतना नरम, वीर के पास इतना नरम दिल पाया है मैंने, कि वो ये चीजें अपने देश के लिए, अपने अपने देश के लोगों के लिए करना चाहता है। तो वीर, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन द फ्यूचर विद ऑल दिस? ये कहाँ आप अपने आप को देखते हैं या ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन जो मुझे जहाँ रखेगा वो तो नौकरी वहाँ करना ही करना है, पता है। फिर भी दिल तो यहीं पर है जहाँ काम कर रहे हैं। सो main two passions that I have is, one is writing. I'm a compulsive writer, so I have to write. Of course Almost you every are. day I have to write. Every day I have to write 2 or 3 pages. उसके बिना वो addiction है मेरे लिए, जिसे कहते हैं ना कि opium writing. And second is like being with this students, children, and this work जो लोग social work बोलते हैं, मैं social work नहीं उसको term use करता. So just being with them and just enjoying with them. So these are the two things which are my passion, and I think वो जिंदगी भर वो चलेगा. नौकरी तो एक टाइम रिटायरमेंट आएगा, खत्म हो जाएगा, वो सरकारी नौकरी है, बट ये खत्म नहीं होगा, ये मुझे पता है. और द बेस्ट पार्ट इज लाइक I started writing now fictions. Yes. बहुत ज्यादा पहले fiction non-fiction दोनों लिखता था. Like I have 4 books published by Sage. One latest book is which has come in UK and USA but still not published in India, is a book on transgenders in India. वो एक पब्लिकेशन के लिए, बट अब मैं बहुत yeah, I think we're gonna finish our conversation today because I'm losing Veer's voices here. But I thank Veer very much for coming here today. And if anybody wants to get in contact with the organization and with Veer, you guys can contact me. I can give you Veer's contact detail and then get involved heavily. Veer, thank you so much for coming. Thank you so much. I mean, I just wanted to show the people कि हमारी पुलिस ऐसी पुलिस नहीं है जो आप इमेजिन करते हो. हमारी पुलिस वीर जैसी भी है. Thanks, Veer. Thanks.